A shipwreck in the Greek islands. Hundreds of passengers struggle to escape in this stormy weather. We need to help this man! With their life on the line, some people become heroes. Don't let go! Others do whatever it takes to stay alive. Keep her away! She'll kill us both! Investigators uncover the series of events, छोटी-छोटी गलतियां जिनके की बहुत ही भयंकर परिणाम निकले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट भामरी, लेकर के आया हूं एक नया एपिसोड आपके फेवरेट शो दुर्घटनाएं डिजास्टर्स का। ये शो जो आप हर हफ्ते सुनते हैं आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, जो कि है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। इस शो में हम हर हफ्ते चर्चा करते हैं किसी न किसी दुर्घटनाएं डिजास्टर्स की जो घटी थी इस धरती पर अलग अलग समय में। और आज के शो में हम चर्चा करेंगे 26 सितंबर 2000 की एक घटना। A passenger ferry pushes its way through a storm. What is that? जमीन के काफी करीब है ये शिप, और ये ग्रीक आइलैंड्स में जो फेरी है वो डूब रही है in the swirling winds and the stormy seas. There was a hole, and it was going to sink, and it was going to sink fast. A huge rescue operation kicks in. और जो rescuers हैं उनको अपनी जान का भी ख्याल रखना पड़ेगा इस मौसम में अगर उन्हें इन लोगों को बचाना है। I never want to be in that situation ever again because it was terrifying. But I had enough time to think, okay, well, this is the part where I die. It was like a catastrophe. It was as if it was coming the end of the world for this island. ग्रीस के लोगों के लिए ये एक नेशनल डिजास्टर है और पिछले 30 सालों में ये सबसे बड़ी डिजास्टर मानी जा रही है। ऐसा ये क्यों हुआ, इसको जानने के लिए तो कितने ही महीनों की डिटेक्टिव ऑपरेशन चाहिए होगा, और यही क्वेश्चन वो फिर से रेज करेगा कि कितनी सेफ हैं जिन शिप्स के ऊपर हम सैर करते हैं। ग्रीस की जो कैपिटल है एथेंस, उसकी जो है 3000 साल पुराना इतिहास है। A history built on the easy access of the city to the Mediterranean Sea. The harbor district of Athens is called Piraeus. इस जगह से और 200 आइलैंड जो कि बिखरे हुए हैं एजियन सी में, उनके बीच फेरी बोट्स टू एंड फ्रो चला करती हैं। आइलैंड हॉपर्स के लिए दिस इज वेयर द एडवेंचर बिगिंस। Here somewhere, it has to be. Friday today would be good. I'm hurrying. Are you sure you don't go? मंगलवार 26 सितंबर 2000, क्रिस्टीन शैनन और हाइडी हार्ट दोनों जो हैं सिएटल से हैं और काफी अच्छी दोस्त हैं। उन्होंने टिकट खरीदे हैं फॉर अ फेरी राइड टू द आइलैंड ऑफ पेरियास विच इज 166 किलोमीटर टू द साउथ ईस्ट। Samina? Express sounds good. क्रिस्टीन जो है 32 साल की हैं और एक टीचर हैं जो कि प्री स्कूल बच्चों को पढ़ाती हैं। दूसरी तरफ हाइडी जो है वो 26 साल की है और उन्होंने अभी कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरी करी है और वो आगे जो है बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ना चाहती हैं। उनके लिए दोनों के लिए ये क्रेजी काइंड ऑफ डे था। They had planned initially to go to the island of Santiago, which is further south. I have it. Okay, let's go. We have to hurry. Now, I have the tickets. We'd been enjoying Athens the night before a little too much, and we overslept and missed our Santorini boat. I had never heard of Paros. I even asked them, well, show me on a map where the island is, and then I said, never mind, it doesn't matter, let's just go. It's the next boat. Let's go somewhere. So it was a fluke that we were on that boat. Here is where chance is steering them. It could be
a whole lot worse. If you want to go on a greed getaway, then Paros is what the guidebook mention it. Life is laid back and the backdrop is enchanting. तकरीबन 12,000 लोग रहते हैं पेरोस में year around. Add to this, in the tourist season, तकरीबन 1,00,000 लोग इस island को visit करते हैं. Ferries from Athens head towards the center of the town Perikia. There is constant traffic to and fro from the mainland. जैसे ही एक बोट लीव करती है तो दूसरी सामने नजर आ जाती है और उन पे सवार होते हैं कितने ही सौ टूरिस्ट जो कि इस आइलैंड को देखना चाहते हैं. क्रिस्टीन और हाइडी उन 472 लोगों में शामिल हैं जिन्होंने आज जो है इस शिप समीना के ऊपर सवारी करी है. As they are ready to embark, एक चीज जो साफ हो जाती है उनके दिमाग में वो ये है कि कितनी शिप्स तो जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो नए हैं, रिसेंटली बिल्ट है, लेकिन समीना तो एक किसी और ही दूसरे एरा की शिप है. वो 1966 से इन आइलैंड्स पे फेरी की रूप में काम कर रही है. इन दोनों के पैदा होने से पहले समीना को लॉन्च किया गया था. इनको ये बात पता नहीं है, लेकिन ग्रीक लॉज के मुताबिक एक साल से थोड़ा ज्यादा बाद समीना को जो है ऑपरेशन से निकाल दिया जाएगा and it would be sent to the scrap yard. I made a few jokes to Christine about the lifeboats don't look very safe if we get into trouble out here. I said we'll be screwed. And I said, well, there's no icebergs in the Aegean, so we should be okay. समीना जो है तकरीबन 1000 पैसेंजर्स को लेके चल सकती है और उनके अलावा उसके 61 क्रू मेंबर्स भी हैं. इसके मुताबिक शिप जो है आज आधी ही भरी हुई है. कैटरीना स्टार्क और उनकी कजन सारा डेविस जो है वो न्यूजीलैंड से हैं और वो बैक पैकिंग कर रहे हैं और वो भी क्रिस्टीन और हाइडी की तरह दे आर सेलिंग इनटू द अननोन. We had no plans. We went to get on the very first ferry that was leaving, going wherever it was going to take us, and that happened to be first stop Paris. शाम के 7:15 पे जबकि उनको 2 घंटे हो चुके हैं इस शिप पे सवार हुए. द सन इज सेटिंग इन द स्काई. अभी भी उन्हें 3 घंटे और लगेंगे बिफोर द समीना अराइव. जो स्पोर्ट्स फैन है उनको तो पता है कि किस तरह उन्हें अपना टाइम बिताना है, चाहे वो पैसेंजर हो चाहे वो क्रू मेंबर हो. एक बहुत ही मेजर सॉकर मैच चल रहा है लाइव टीवी पे. जर्मनी की एक टीम है, उनका मैच जो चल रहा है वो एथेंस की स्टार टीम के साथ चल रहा है. The reception wasn't very good, and so they had various staff come along trying to fix the TV, and everyone was putting suggestions for how to fix the TV, and it seemed to be quite important to everybody on board that they get to see this game. शाम के 8 बजे समीना पासेस द आइलैंड ऑफ किथनॉस. सही टाइम से चल रही है ये शिप और उनको अपनी मंजिल पे पहुंचना है तकरीबन 10:15 बजे के आसपास. हवा तेज होती जा रही है और समुद्र जो है बड़ा रफ होता जा रहा है, लेकिन ये जो नॉर्दर्ली विंड्स होती हैं ये कॉमन है इस टाइम के लिए. पिछले 3 दशकों से समीना ने इससे भी खराब मौसम को झेला है. क्रिस्टीन और हाइडी 2 ही इकलौते रह गए हैं अपने पैसेंजर्स जिनकी बात करूं तो मैं उनको ऐसा लगता है कि उनकी टिकट जो है उनको अंदर जाने के लिए मना कर रही है. Wake me when we're there. I said, we have third-class tickets. We have to stay out on the deck. It's going to be a cold, wet, terrible night. But I didn't even think to go downstairs where most of the people on the boat were. समीना के क्रू के लिए ये जर्नी रात को जो चल रहे हैं दैट इज अ रूटीन अफेयर फॉर देम. और हैजर्ड्स सच एज रीफ्स एंड रॉक्स आर क्लियरली मार्क्ड ऑन देयर चार्ट्स. और उनमें
में ज्यादातर के ऊपर तो वार्निंग लाइट्स लगी हुई हैं। 2 jagged outcrops rise from the sea within sight from the harbor of Perios. इनको कहा जाता है पोर्टल्स या गेट। They lie around 5.5 kilometers from the town. ये जो गेट्स हैं ये फेमिलियर लैंडमार्क है जो भी इस तरफ चलते हैं समुद्र में। They are welcoming but dangerous too. The rocks rise 25 meters out of the sea, and every passing ship must give them a wide clearance. At night, a beacon which is there put on the taller of the 2 rocks warn the sailors who go by this way. अगर आप बहुत नजदीक आ जाते हैं इन गेट्स ऑफ पेरोस तो डिजास्टर विल फॉलो। वो लोग अभी भी 2 घंटे दूर हैं, but they are sailing into a growing storm. इस तूफानी वेदर में भी क्रिस्टीन और हाइडी अभी भी बाहर ही हैं। Had I known we could go to any other part of the boat at that point in time, I would have. But I didn't know, and actually being in that part of the boat, I think, was very fortuitous for us because we were able to be aware of what was going on later. वो डेक पे मौजूद हैं, इसलिए वो अपनी जान तो बचा ही पाएंगे, क्योंकि थोड़ी ही देर में जितने भी लोग सवार हैं इस शिप पे, they would be fighting for a battle of survival. 26 सितंबर 2000 की शाम को the ferry Express Samina leaves the harbor of Athens Piraeus to go to southeast. She is going to make it to the island of Piraeus, which is 5 hours journey from the starting point in the Aegean Sea. जैसे ही सूरज डूबता है तो मौसम है वो बहुत ही खराब हो जाता है और रात होते होते तक तो शिप जो है नॉर्दर्ली गेल में फंसी हुई है। इस शिप का क्रू जानता है कि वो जो है उनकी शिप जो है बहुत बड़ी है, टफ है बहुत ज्यादा, और इससे भी ज्यादा वेदर वो झेल चुकी है पहले अपनी जर्नीज में। समीना जो है 115 मीटर लंबी है, एक सॉकर फील्ड से भी ज्यादा लंबी और 18 मीटर चौड़ी है। पैसेंजर्स आर वाइडली डिस्पर्स। क्रिस्टीन और हाइडी जो है वो तो बाहर ओपन डेक पे ही घूम रही हैं। कैटरीन एंड सेरा आर इन द मेन पैसेंजर लाउंज। शिप का जो नर्व सेंटर है वो है इंजन रूम। इट इज बिलो द वाटर लाइन बट इज प्रोटेक्टेड बाय अ सीरीज ऑफ वाटर टाइट डोर्स। क्रू को जो है इधर उधर मूव करना पड़ता है और वो सेफ है, अभी सेफ है जब तक कि वो अपने पीछे इन दरवाजों को बंद ना कर दे। To decrease the rolling effect of the waves, the ship also has a stabilizer section. और ये छोटे पंख की तरह हैं, which extend to in the water. ये बहुत ही बम्पी राइड है इस वक्त, लेकिन फिर भी पैसेंजर्स एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं अगर उन्हें जरूरत हो। As we got further away and night began to fall, the seas got rougher and it became stormy until it got to the point where you couldn't even walk on board. You had to kind of stumble sideways. People were kind of laughing. It was kind of funny at the time. Being from a place where we ride ferries quite often, it wasn't really a concern to us at the time, but it was pretty rough out there. रात के 10 बज गए हैं और हवा जो है तकरीबन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। जो लहरें हैं वो अब 2 मीटर की ऊंचाई तक जा रही हैं। इन सब चीजों के बावजूद भी जो विजिबिलिटी है वो अच्छी है। समीना जो है टाइम से चल रही है और अभी भी उसकी रफ्तार 33 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है वो। और तभी अचानक शिप जो है लेफ्ट की तरफ मुड़ने लग जाती है। The boat turned enough that it startled me awake, and I woke up and was kind of dazed a little bit.
You can't just park a boat like you're parking a car, and so I thought it was odd that I felt this G-force of the boat turning. Christine said, "Hey, there's lights. I see shore. We must be getting pretty close to docking." इस शहर पेरिकिया की लाइट्स और इवन हेडलाइट जो है गाड़ियों की वो 5.5 किलोमीटर दूर से नजर आ रही है आराम से, और तभी एक और लाइट कट्स थ्रू द डार्कनेस ऑफ द नाइट। This rock just comes out of nowhere, just out of the black night. And I'll never forget what it looks like in my mind. It was, you know, this brown, kind of craggly, sandish looking rock that had lights on top of it shining down, so it illuminated it. And it made it look like a movie set. The side of the boat scraped along the side. I could have walked over and touched it. And you could hear down in the lower decks of the boat that the metal was just ripping apart. The unthinkable has happened. Samina जो है, it has crashed into the gates of Paros. 1 million kilos of ship ride across the rocks. It was the worst sound, and it was the loudest sound I've ever heard in my life. It sounded like fingernails on a chalkboard, just God's fingernail on the biggest chalkboard in the world. There was a hole, and it was going to sink, and it was going to sink fast. The shock wave पूरी ship में गूंज रही है. Suddenly there was a big lurch to the right side of the boat, and people who were standing up got thrown off their feet. Everything in the bar smashed. I looked out the window and there were 2 large rocks went past that looked white, lit up by the light inside the ship. I don't know what that was. Oh, man, that just doesn't sound good, you know? In a situation like this, the time frame is so hard to put back together. But it seemed like maybe a minute or two until the boat started to noticeably lilt to the side and tip. And that's kind of when the chaos started. Get out of this boat! Lots of people were crying, lots of people were praying, holding on to each other, yelling. There was no alarm or siren. There was no one to tell us what we were supposed to do. We need to get off this boat and we need to leave right now. We don't have to panic. Christine said to me the Titanic took hours to sink. And I said, we don't have that much time. We don't have hours, Christine. We need to leave now. Okay. In my mind, I thought, this boat's going to sink and we're all going to die. All these people trying to get life jackets. Being taller, I was able to reach over the heads of most people who were trying to get hold of life jackets and grab 2. समीना के पास 61 क्रू मेंबर थे, लेकिन वो कहाँ है इस मुसीबत के टाइम पे, और पैसेंजर्स को अपने आप ही खुद को बचाना होगा. So I yelled to Christine, come here, I think I found life vest. Hey, just take it out. At this point, people were starting to run past us. And I was saying, here, take these, and throwing them out, and people were just panicking. कोलिजन के बाद कुछ ही मिनटों में शिप की जो लाइट है वो चली जाती है. पैसेंजर जो है बिल्कुल अंधेरे में डूब जाते हैं, और उसके कुछ देर के बाद जलता है इमरजेंसी जनरेटर. And then the first flare went off. This eerie red glow coming down over the ferry gave it a whole nother feeling of just terror that we're out in the night, in the dark, and the ferry's gonna sink.
दूसरी तरफ हार्बर के अंदर पोर्ट ऑफिशियल्स जो है उनको ये खबर मिल गई है कि क्या हो गया है और दे आर गेटिंग रेडी। पोर्ट अथॉरिटी वाइस कमांडर डिमिट्रियोस मेलिनोस जो है एक रेस्क्यू ऑपरेशन को प्लान करते हैं और ही नीड्स ऑल अवेलेबल बोट्स राइट नाउ ओनली। What vessels do we have in the area? Elysius Bismarck runs an yacht business in the Perichia. The first I heard of the disaster was a phone call that I got from the port police at about 10:15. Can I get out there with my boat as quickly as possible just to help with whatever might be necessary? And there was no way that we had any idea that it was going to be a disaster of that magnitude. Parias has a मेडिकल सेंटर जो यहाँ के लोग निवासी हैं उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करता है वो, और वहाँ पे कोई सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट नहीं है। डॉक्टर जॉन पॉलीजॉइडीज वो जो है पिछले 35 साल से ER डॉक्टर सर्जन थे वो अब रिटायर हो चुके थे, लेकिन फिर भी he helps to run the center. We saw the ship was going down and there were a lot of boats and lights and so on. I personally did not expect anything tragic to come out of that because we were so close also to the harbor. दूसरी तरफ समीना के ऊपर जो 472 पैसेंजर्स थे, most of them are in sheer terror. It was chaos. It was people not knowing what to do and waiting for a captain or a crew to help us. There was a woman who went through the door just before us, and she, as soon as she got out onto the deck, she climbed over the railings and just jumped off, like didn't look back or didn't say anything to anybody, and just climbed over and threw herself off into the water. There was people holding children over the railings, wanting to throw them down to people in the water. It was quite a terrible scene. The wind hampers the effort to abandon ship. They were releasing inflatable life rafts. They weren't attached to the ship, so as soon as it was released, it was in a big storm, it would get picked up by the wind as soon as it was inflated, and they were just blowing halfway to Athens. जो लोग पानी में कूद चुके थे अब तक, उनसे काफी दूर राफ्ट थी और इस कंफ्यूजन के माहौल में हाइडी हार्ट के सिर पे भी चोट लग जाती है। I kept thinking, if I black out now, I'm done for. This boat's sinking. I have to stay conscious. I had this adrenaline rush, and there was, a feeling that I would call terror. I knew instantly this was going to be a fight for our lives. There was some point in time where I literally felt myself leave my body and instincts kicked in. Everybody was running to the rear of the boat, and Christine just looked at me and said, "Go that way, to the front of the boat." And she said, "But nobody's up there." It was the darkest part of the boat. It was the highest part of the boat. She said, "Nobody's up there." I said, "I don't care, go." And luckily for us, that's where we found a lifeboat hanging over the side of the ship. हाइडी और क्रिस्टीन जो है उस शिप डूबती हुई शिप से बच निकले हैं, but they are still at the mercy of the storm. When we jumped into the lifeboat, it wasn't orderly, here's your seat. It was jump. Where you land is where you are, and so we were just kind of all pig-piled in this lifeboat together. Heidi and Christine have escaped this sinking ship, but they are still at the mercy of the storm. The battle of survival has taken an ugly turn. There was 5 or 6 men in the back of the boat, and they were fighting with each other. They were yelling at each other. As the ferry was sinking, they kept pointing at the ferry and fighting with each other. And then, this is when I see the guy swimming up to the boat, and so I started getting ready. I'm thinking, okay, I need a rope. I got to throw him something. He has no life vest on.
The only thing you could see was his eyes and his nose coming out of the water, and he was just barely making it, swimming towards us. Everybody else on the boat was yelling, no, we can't take any more people on. I've got you, don't worry! I've got you! Now Heidi leaned over and grabbed this gentleman's hand, and I reached over and grabbed her by the waist, and she told me, I'm not letting go, and I yelled to the other people, she's not letting go. He had taken off almost all of his clothes. He was wearing just his underwear. I mean, I'm not a very big person. I'm 5 feet tall. Just me trying to pull him in the boat wasn't going to work. हर एक पैसेंजर को अब ये सोचना पड़ रहा है कि वो दूसरों की मदद करें या अपने आप को बचाएं इस डूबते हुए जहाज में से। जो लाइफ बोट में आदमी लोग थे उन्होंने देखा कि हाइडी तो अब छोड़ नहीं रही है इस आदमी को, तो उन्होंने भी अपनी मदद करी और इस आदमी को लाइफ बोट के ऊपर खींच लिया गया। I don't know what they were thinking. They were panicking. So, I mean, who am I to judge what other people were thinking and doing? But there was a lot more that could have been done that night. जो 533 लोग सवार थे इस शिप में शुरुआत में, उनमें से काफी लोग तो पानी में कूद चुके थे, लेकिन फिर भी कुछ थे जो इस शिप में ही ट्रैप हुए थे अभी तक। The ship begins to roll over, और अगर ये पानी में चली जाती है तो कितने ही लोगों को साथ लेके जाएगी अपने। The passenger ferry Express Samina has struck with rocks at the island of Paros in the Aegean Sea. 533 पैसेंजर और क्रू जो है अब लड़ाई लड़ रहे हैं, a battle to survive in the high winds and the stormy seas. कितने लोग तो लाइफ बोट में आ गए हैं, लेकिन कितने लोग ऐसे भी हैं जो इस शिप में ही हैं, लेकिन उनको मन में एक डर भी है कि कभी भी ये शिप उनके पैरों तले से निकल सकती है। At that stage we were on the deck trying to figure out whether it was a good idea to jump overboard as well. But we were tilting further and further, and it was getting to the point where we didn't really have that choice anymore. रात के 10:50 हो चुके हैं और 40 मिनट बीत चुके हैं इस कोलिजन को हुए। As the Samina continues to roll over, Katrina Stark has little choice. She hauls herself over the rails. शिप जो है पूरी तरह से टेढ़ी हो चुकी है और कैटरीना जो है उसके हल पे बैठी है, और उनके मन में ये आ रहा है बात कि क्या वो समुद्र तट तक तैर के जाएं या वो यहीं पे बैठी रहें, हेल्प की वेट करें आने की। While I was sitting there thinking about that, all of a sudden the ship just sank underneath us and sucked us down and everything around it. I don't know how much time we were under the water, but I had enough time to think, okay, well, this is the part where I die, this is the part where I drown. I kind of thought, well, okay, that's fine, and had enough time to be okay with that. Just as we got there, we saw the ferry sinking, which was an extreme sight. And to see this entire ship sink beneath the waves and to be gone and just leave us in our little lifeboat, it was amazing. It was almost beautiful in a sad sort of way. And then complete blackness, darkness, huge waves. From the gates of Paros तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर समीना जो है डूब जाती है पूरी तरह। Even without its engines, the high waves, the stormy weather, and its own momentum pushes the Samina close to the shore. तल जो है इस तरफ सिर्फ 38 मीटर की गहराई पे है, और जैसे ही समीना सिंक करती है तो huge bubbles of air escape from it into the atmosphere, making the water less dense and the objects sinking into the sea to sink faster. कैटरीना स्टार्क भी काफी हद तक नीचे जाती हैं, उसके बाद buoyancy of her life jacket pulls her up to the surface.
as suddenly as I had been sucked under, suddenly I popped out the top. और उनकी पहली प्रायोरिटी इस समय है कि अपनी कजन सैरा डेविस को वो ढूंढे, और उस तूफान में वो बता नहीं पा रही थी कि वो किस तरफ है. The waves were so big that for 1 second it sounded like she was over there, and so I tried to swim that way, and then the next second it sounded like, oh, she's over there. I tried to swim that way. Sarah! Sarah! I can hear you, but I can't see you! Sarah! Sarah! Eventually I just said to her, okay, make sure that you get on a boat and get back to land, and I will see you back on shore. रात के 11:15 बजे डॉक्टर Polydeuces receives his first casualty of the night, but something does not add up. They brought a man on a stretcher. He was semi-conscious. And then we started working on him. He had hardly any blood pressure. And when we were resuscitating him, I realized that he was dry, which it meant that he didn't actually, he was not from the ship. Anyway, we carried on. Eventually we lost him. He died in our hands. And then people came and he said, you know who it was? And I said, no. उनका पेशेंट जो था वो समीना से नहीं था, but still the disaster claimed its first victim. उस आदमी का नाम था डिमिट्रीस मेलेनोस, जो कि रेस्क्यू ऑपरेशन को देख रहे थे. In the crisis he had suffered an heart attack, और उनकी उम्र सिर्फ 40 साल थी. So you can understand, even at this early stage, although we did not know the number of people that we were going to lose, there was that sense of tragedy immediately from the very beginning. A local shopkeeper जिनका नाम था जॉर्ज स्कैंडालिस अपना वीडियो कैमरा उठाते हैं और ये वीडियो शूट करते हैं जबकि survivors were being brought on shore. As soon as we got close enough to shore, and when I saw this white cathedral with the blue dome top, that was when I finally knew we made it. We're going to get to shore. We're going to be alive. I felt more alive than I've ever felt in my life. Giddy, almost giddy. And actually afterwards, one of the things that I had to come to terms with was that people died and I felt so alive. One of the local fishing boats now appear, crammed with people who have been dragged from the sea. Local boat owner Alexis Bismas is one of the rescuers who is trying to rescue people from the sea. 1 minute we were flying across the top of a wave, the next minute we were burying the bow of the boat into the previous wave. We had water coming across the decks. I've been sailing all my life. I've never had a situation like that. I never want to be in that situation ever again because it was terrifying. वो तकरीबन 25 लोग को बचाते हैं और 3 ट्रिप उन्होंने मारे थे इस स्टॉर्मी सीज के अंदर और 25 लोगों को वो समुद्र से बचा पाते हैं. One of the amazing things in these situations is the way that people behave. A young man, we pulled out, he was still carrying his portable stereo system. So the one hand's trying to grab hold of the boat and the other hand, as we realized, was being hampered by this stereo system that he still had in his other hand. One of them was an old lady who had tied to her life jacket her bag. As we were trying to drag her into the boat, we realized that something was stopping her, and I went to cut her free of this bag, and she said to us that if we did, we should throw her back because that was her entire life in this bag. कितने ही सर्वाइवर्स जो थे वो थे इन द स्टेट ऑफ शॉक. वो गीले हैं, ठंडे हैं और टोटली एग्जॉस्टेड हैं अपनी इस एक्सर्शन के बाद.
तकरीबन 100 मीटर दूर अभी भी कितने ही लोग हैं जो पानी में हैं and waiting for their turn to be spotted by the rescuers. कैटरीना स्टार्क और एक फेलो सर्वाइवर जो कि बिल्कुल स्ट्रेंजर है उनके लिए, they are floating in the water holding a piece of wreckage. My first surprise about being in the water was that it was warm. I was really expecting the water to be cold. They were big waves and you just had to cling on tight to the piece of wreckage. Not too far away from us was an older Greek woman who couldn't swim, and she was panicking and was screaming and yelling, trying to get someone to come and save her. And the guy that I was with was saying she's going to want to come over to us, and if she grabs hold of us, she's going to drag us down. Keep her away! She'll kill us both together! She had kind of wild eyes, like she was clearly panicking. And a big wave came and washed over her, and she didn't come back up out of the water. She had drowned. अभी भी उम्मीद की किरण बाकी है कई लोगों के लिए. Some people have been pushed towards the south. वो इन पत्थरों से बचते हुए एक सैंडी बीच पे आ गए हैं. A life raft reaches at the same spot. अभी के लिए तो ये लोग सेफ हैं, लेकिन बच्चों ने जो ये देखा है सब कुछ नजारा अपने आंखों से, उनके लिए तो काफी मुश्किल हो जाएगा आगे. तकरीबन 400 से ज्यादा सर्वाइवर जो हैं आर ऑन द डॉक साइड. Many had suffered an terrifying ordeal in the water. उनमें से कईयों को मेडिकल सेंटर रश किया जाता है, जहां पे कि डॉक्टर जॉन ने 15 लोगों की एक टीम असेंबल कर ली है. Some are doctors and nurses residents on the island, और कई तो टूरिस्ट हैं जो है कि वॉलंटियर कर रहे हैं हेल्प करने की. Between 11:30 and 12, the first drowned was brought in on a stretcher. And although I worked for 35 years as an accident surgeon, it was a horrible experience. And that was the beginning of the horrific feeling which I had that this is serious now. रात के 12 बजे 1 घंटे तक पानी में रहने के बाद फाइनली कैटरीना स्टार्क को जमीन पे ले आया जाता है. We were the last people that they were able to bring up onto the boat. They headed back for the harbour, and on the way they stopped a couple of times to pick people up, but they would go to pick them up and realise that they were dead, and so they'd just leave them where they were. कैटरीना को अभी तक ये बात पता नहीं लगी है कि क्या उनकी कजन भी बच पाई थी. Sarah? Katrina? I was just never been so happy to see anybody in my whole life. And I just grabbed hold of her and wouldn't leave her side for a second. To see you. Oh, you are you doing? You okay? Are you keeping warm? Yeah. It was terrifying. I mean, it's been 5 years since the accident, and I still have nightmares. I still think about it. It will still make me cry. You guys have had quite a shock being in the water. It was traumatic, and it was very scary, but it was also a singularly defining moment in my life where I was able to use all of the resources I had to survive. I think we've got him! Pull, 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 pull! I don't think I would have chosen not to live through this. रात के 12:30 बजे जबकि कोलिजन को 2 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है अब जो है सिर्फ डेड बॉडीज को ही सर्च बनती जा रही है. When you start seeing the bodies in the sea,
somebody that I knew that an hour ago they were breathing, and suddenly they're dead, and it was very distressing. I mean, it took me a very long time to put it out of my mind. It was very difficult. 25 people are now confirmed dead. Dr. Polyzoidis is overwhelmed as the victims continue to arrive. Do I go to this room and try and save someone? Do I wait and see whether it's worth saving? And it was like a catastrophe. It was as if it was coming the end of the world to this island. So it was almost like you're seeing a movie that's not happening to you. Every half an hour, the number of bodies increased. रात के 2:30 बजे तक जो कंफर्म डेड थी उनका नंबर पहुंच चुका था 60 तक। मेडिकल सेंटर में इतनी जगह ही नहीं है इतनी बॉडीज को रखने के लिए, और साथ में जो चर्च था वो अब बन चुका है टेम्परेरी मॉर्ग। सारी रात सर्च चलती रही टू रेस्क्यू पैसेंजर्स, रेस्क्यू पीपल रादर, डेड और अलाइव। सारी रात ये चलता रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। और थोड़ी देर में इन्वेस्टिगेटर्स अपने सवाल पूछना शुरू करेंगे कि क्यों इतने लोग मारे गए इस हादसे में और कैसे ये हादसा घटित हुआ। द पैसेंजर फेरी एक्सप्रेस समीना हैज sunk into the storm in the Aegean Sea। अभी तक 60 लोग कंफर्म्ड डेड हो गए हैं इस हादसे में, और कितने ऐसे भी हैं जिनको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। और जब सुबह होती है तो पिछली रात का जो तूफान था उसकी पावर पता लगती है। A lifeboat lies smashed to pieces on the rocks. Life rafts blown away empty. एक बोर्ड जो कि हार्बर में लगाया गया है उससे पता लगता है कि कौन अलाइव है, जिंदा है, और कौन आर स्टिल मिसिंग। जो डेड बॉडीज हैं वो दे वुड बी कंटिन्यू टू वॉश अप द शोर फॉर डेज टू कम। पैरोस के ऊपर उतने कॉफिन ही नहीं है और मोर अराइव। इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स आर टच्ड बाय द ट्रॉमा। I was so shaken by this that I didn't sleep for 2 nights, and on the 3rd night, where I went to sleep, I dreamt that my son was drowning. Very quickly, the grief turns into anger. Where were the crew when the ship collided with the rocks? Crew कहाँ थे जबकि पैसेंजर को उनकी मदद की जरूरत थी? Rumors spread like wildfire, and they were picked up by the media also. क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि कुछ क्रू मेंबर इंस्टेड ऑफ स्टीयरिंग द शिप दे वर बिजी वॉचिंग द सॉकर मैच ऑन टेलीविजन? द कैप्टन 53-year-old Vasily Yanakos is picked up by the police for questioning. On Paros, the funeral begins. एक 4 वर्षीय लड़का जो था वो भी डूब गया था अपने फादर के साथ। डाइवर्स ने खोजे थे 10 शव जो कि समीना के हल में ही ट्रैप थे। जो लास्ट बॉडी खोजी गई थी वो बह रही थी। इट वॉज फ्लोटिंग ऑन द 50 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ पेरोस, और ये इंसिडेंट के 2 हफ्तों के बाद मिली थी। टोटल जो है 80 लोगों की डेथ हुई थी इस हादसे में। 75 तो पैसेंजर्स थे और 5 क्रू मेंबर थे। ये ग्रीस की वर्स्ट maritime disaster थी in over 30 years. A national tragedy. In the bitter aftermath, the spotlight now falls on the company which owned the Samina and its vice president. He could face multiple charges and multi-billion-dollar compensation claims. इंसिडेंट के 2 महीने बाद जो कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट था उन्होंने सुसाइड कर लिया था। वो अपनी छठे मालिक के ऑफिस से खिड़की से नीचे कूद गए थे। एथेंस की नेशनल टेक्निकल यूनिवर्सिटी के मैरीटाइम एक्सपर्ट्स जो हैं वो एक इंक्वायरी शुरू करते हैं इस इंसिडेंट में। डिटेल्ड टेस्टिमोनी इज गैदर्ड फ्रॉम 46 क्रू मेंबर्स और तकरीब 192 पैसेंजर्स की भी टेस्टिमोनी ली जाती है। जो ग्रीक की लीगल अथॉरिटीज हैं वो चाहती हैं कि यूनिवर्सिटी उनको पूरा डिटेल विस्तार से बताए कि आखिरकार क्या हुआ था उस रात।
Professor David Melanu of the National Research Centre of Canada is the worldwide expert on ferry safety. और जो ग्रीक इन्वेस्टिगेटर्स की इंक्वायरी की फाइंडिंग्स थी उनको वो पूरी तरह स्टडी करते हैं और ग्रीक अथॉरिटीज ने कई चौंकाने वाले फैक्ट्स उजागर किए थे. What they found at the inquiry defied some of the initial speculation concerning the age of the ship, and the accident, in fact, turned out to be caused by something completely different. Testimony reveals each small but critical factor which turned a normal sea crossing into a national disaster. 3 hours into the journey, the crew switches on the ship's autopilot. The autopilot is an electronic link between the compass and the rudder, correcting the rudder a little bit one way or the other to bring you back where you want to be. And even on the autopilot, a crew member should have constantly monitored the position of the ship. It's bad practice to leave an autopilot unattended, particularly in bad weather, because the wind, the waves and the current are all acting to drift the ship in one direction. And that kind of steady drift is not compensated for by the electronics in the autopilot. और जैसे जैसे मौसम खराब होता जा रहा था, द क्रू ने स्टेबलाइजर सिस्टम भी डिप्लॉय कर दिया था, जिससे कि पैसेंजर्स को उतनी तकलीफ ना झेलनी पड़े मौसम की वजह से. The stabilizer uses 2 small fins to counteract the roll of the ship. But something extraordinary has happened. Only the starboard fin, यानी कि right hand side वाला fin, has fully extended. Very unusual. Normally we'd expect both stabilizers to be working at any one time. With just one stabilizer, the ship is no longer symmetrical, so the flow around the ship is unbalanced, and as a result, the ship will tend to drift one way rather than go in a straight line. और चूंकि सिर्फ starboard fin काम कर रहा था, the Samina is pulled surely but slowly towards the right hand side. It's a deadly malfunction. The captain ने सोचा था कि तकरीबन वो समीना को 740 मीटर लेफ्ट पे रखेंगे from the gate of Paros, लेकिन but when the Samina actually arrived, it was on a collision course. और किसी crew member ने एक last minute effort डाला था to steer the ship left of the rocks, but the ship can't turn quickly enough. It was very unfortunate that the ship got hold, but there was really no reason why the ship should have sank. The damage was within the range that you would normally expect a ship to survive. The east face of the taller pinnacle is where the ship actually strikes. रात के 10:12 पर 6 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा गैश खुल गया है शिप के हल में. और ये जो कट था ये वाटर लाइन के ऊपर था और किसी भी तरह पानी नहीं घुसना चाहिए था इसके अंदर. Moments later, a second impact. The stabilizer fin जो है वापस शिप के अंदर ही जाके घुसता है. It is like a dagger into the ship's side. और ये जब stabilizer fin वापस शिप की साइड में घुसता है तो it is like a dagger. और ये जो है 3 मीटर का जो गैप खुलता है, it is below the water line. और worse still, it is all along the engine room. The generator of the ship are knocked out और शिप में जो पूरी है अंधेरे में डूब जाती है शिप. जो इन्वेस्टिगेटिंग एक्सपर्ट्स होते हैं वो डाइवर्स को हिदायत देते हैं कि वो नीचे जाके देखें और डिटेल में बताएं कि समीना की क्या हालत है. Inside they discovered the final piece of the puzzle. Even with 2 large gashes in the ship's
side, the Samina could have been saved, but a small error sailed the feet of Samina. The passenger ferry Express Samina strikes rocks on the island of Paros, और उसके बाद 2 गश खुल जाते हैं उसकी स्टारबोर्ड साइड में, और इसकी वजह से वो 38 मीटर पानी में डूब जाती है पूरी तरह। Divers go down to survey the wreck and make some startling discoveries. The Samina is divided into several compartments sealed by watertight doors. जो सेफ्टी लॉज हैं वो हिदायत देते हैं कि ये हमेशा लॉक कर देने चाहिए, लॉक ही रहने चाहिए जब शिप जो है समुद्र में होता है तो। और समीना की आखिरी जर्नी पे some of these doors were open. If you imagine in your house, every time you went through a door from the kitchen, you had to close it, lock it, move on to the living room, open that door, close it, lock it, and carry on. It really does slow down your everyday life. So there is a tendency sometimes to leave these doors open. Because these doors were left open, the water is not just confined to the engine room. और चूंकि अब इलेक्ट्रिकल पावर भी शिप की कट चुकी है, the crew cannot close these doors remotely. 29 क्रू मेंबर जो है उनको फिर बुलाया जाता है क्वेश्चनिंग के लिए by the investigating authorities. This testimony provides the exact picture of the ship's last movement. और जो डाटा इकट्ठा किया गया था उसको एक कंप्यूटर के मॉडल में डाला जाता है। 10:15 बजे सिर्फ 3 मिनट बाद कोलिजन के द शिप जो है वो सिर्फ 5 डिग्री लिस्ट कर रही है टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, और बहुत जल्दी से पानी भरता जा रहा है जो इंजन रूम के पास में गैस लगा था। रात के 10:25 पे वो 14 डिग्रीज लिस्ट कर रही है और अब जो 6 मीटर का गैस लगा था शिप को, which was above the water line, is now exposed to the sea. और यही वो जगह थी जहाँ पे कि समीना और जो 80 लोग उस पे सवार थे, they are now doomed. The ship cannot withstand this degree of damage. समीना जो है वो एक रो फेरी है, यानी कि रोल ऑन रोल ऑफ फेरी। ये एक मॉडर्न रो शिप है। The vehicles just reverse in through the stern doors और उसके बाद वो अपनी डेस्टिनेशन पे सीधा ही ड्राइव के निकल जाते हैं। It is a cost-effective design with a potentially fatal flaw. कितने ही हाल फिलहाल में जो डिजास्टर हुए हैं उसमें जो शिप का डिजाइन था वो इसी प्रकार का था। 1987 में द हेरल्ड ऑफ फ्री एंटरप्राइज डूब गई थी बेल्जियम में with the loss of 193 people. तकरीबन 800 से ज्यादा लोग डूब गए थे, जबकि MS एस्टोनिया डूबी थी इन 1994। वो भी दोस्तों एक रो फेरी ही थी। Unlike a cruise ship or a cargo vessel, which is divided into many small compartments, this ro ship is not designed that way. उसका जो व्हीकल एरिया होता है वो बहुत ही लार्ज कंपार्टमेंट की तरह होता है और ये एरिया इज हाईली वनरेबल टू हाई फ्लड टू स्पीडी फ्लडिंग। Imagine comparing flooding an egg box with flooding just an empty cardboard shoebox. The shoebox would tend to fill up very, very quickly, whereas an egg box would tend to fill up each compartment at a time, so the egg box would stay afloat, whereas the shoebox wouldn't. ये जो ओपन स्पेस है is highly vulnerable because it is close to the water line. The car deck on a ro-ro ferry is low to make driving the vehicles on and off easy. As a result, you're relying on those watertight compartments to keep the ship afloat in the event of damage. रात के 10:29 पे the Samina is listing at 23 degrees. वो इतनी ज्यादा टिल्ट कर रही है कि it is impossible to launch more lifeboats. जिस जहाज में 8 लाइफ बोट थी उसमें से सिर्फ 3 ही लॉन्च कर पाए वो लोग। सिर्फ 3 मिनट बाद 10:32 पे वो अब लिस्ट कर रही थी 33 डिग्री। रात के 10:50 पे द शिप इज नाउ कम्प्लीटली ऑन इट्स साइड। We know the exact time that the ship sank because the clock on the bridge was stopped at 2 minutes past 11.
जो डाइवर्स इस wreck को सर्वे कर रहे थे वो अब बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कवरी करते हैं। शिप में जो 11 वाटर टाइट डोर्स थे उसमें से 9 डोर तो खुले ही पड़े थे। And the most important aspect of this accident was leaving the watertight doors open. As a result, the ship flooded, lost all its reserve of buoyancy and eventually sank. और अगर ये डोर्स लॉक हुए होते तो ये एक्सीडेंट इतना घातक नहीं होता। It would have been a surviving accident. चाहे शिप जो है पत्थरों से टकरा गई थी और चाहे इंजन रूम के पास तो इतना बड़ा गैस लगा था, लेकिन फिर भी ये उतना घातक सिद्ध नहीं होता जितना कि आखिरकार हुआ अगर गेट बंद होते तो। The trial of the captain and 7 others began on May 2005. डिजास्टर के तकरीबन 4 साल बाद The sinking of the Samina led to safety improvements. Greek authorities ने जो है पैसेंजर फेरी की लाइफ कम कर दी थी from the existing 35 to 30 years. इस ट्रेजेडी के बाद हर एक शिप में वॉयज रिकॉर्डर्स भी फिट करना शुरू कर दिए गए। ये जो एयरप्लेन में ब्लैक बॉक्स होता है उसी की काम करते हैं ये वॉयज रिकॉर्डर्स, और अब हर एक पैसेंजर फेरी में इनका इंस्टॉल करना कंपलसरी कर दिया गया है। कुछ बुरे से कुछ अच्छा निकल के आया। उस रात के बाद पहली बार कैटरीना स्टार्क वापस पेरोस लौटी हैं। बहुत ही इमोशनल रिटर्न है ये उनके लिए। It was a pretty traumatic thing to go through, but it's quite a character building experience, and I think it plays a large part in who I am today. हेडी हार्ट और कैथरीन को अवार्ड दिया गया था सिएटल शहर की तरह से फॉर हेल्पिंग आउट पीपल्स लाइफ। I understand my strength a lot more, and I can live freely without the restraints of being scared of what's unknown, because life is an unknown. Even for an heroine, it is tough to look back. Christine and I, we always say we were the lucky ones. We were in the right place at the right time, and that is the only thing I can think of why we made it and so many other people didn't. And it breaks my heart. तो दोस्तों इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का एपिसोड, आपके फेवरेट शो दुर्घटनाएं डिजास्टर्स का। ये शो जो आप सुन रहे थे आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे, जो कि है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। और आज के शो में हमने चर्चा करी थी 26 सितंबर 2000 की एक घटना, द सिंकिंग ऑफ MS एक्सप्रेस समीना। अगर आप मेरे शो के रिगार्ड्स कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी है bhamri.r@gmail.com, यानी कि bhambri.r@gmail.com। दीजिए इजाजत मुझे यानी कि आपके दोस्त आपके होस्ट भामरी को समेटने की। आज का शो मिलूंगा मैं आपसे अगले हफ्ते ठीक इसी दिन ठीक इसी समय और ठीक इसी इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो पर उड़ान पर, और करेंगे हम चर्चा उस शो में एक नई किसी दुर्घटना की, नई किसी डिजास्टर की। आप सुनते रहिए आपका फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान, जो कि है अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट, गॉड ब्लेस।